facial expressions, some of them you have to remember the names, and the reason you should be knowing them is because you will have to test all these muscles to check the nerve, to test the nerve, the facial nerve which supplies all these muscles. So then you will have to go to the patient, you will have to tell him, ऐसे करो, आँख बंद करो, okay? Then you will have to tell him, मुंह बंद करके दिखाओ, फिर उसको गुस्सा मत दिलाओ डायलेटर नेरिस के लिए ऐसे चिमटी निकाल के, डोंट डू दैट, ऑल सच थिंग्स, ओके? ऐसा करो. देन यू हैव टू टेल हिम, मुंह में हवा पकड़ के रखो. So if his orbicularis oris is paralyzed, it will be like this, one side, because both sides have to be, so one side paralysis, okay? Buccinator you will have to test. You can tell him to whistle. बेचारा बोलेगा नहीं, मैं बचपन से कभी सीटी नहीं मारा किधर, तो भी still, then you will have to just tell him blow the air, okay? Blow the air. So that is sign that, so holding the air means orbicularis oris is intact. Blow the air, buccinator is intact, okay? लड़की लोग, आपको अगर कभी किसी लड़के ने छेड़ा बेड़ा सिटी में जाए, तो पलट के उसको शाप दे सकते हैं कि तेरा बक्सीनेटर पैरालाइज हो जाए, मेडिकल शाप. और वो शाप अगर सही निकला तो उसके बाद he'll be not able to whistle. So muscle for whistle, ओके. आज सचिन सर ने आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया रहेगा, वो है ब्लड सप्लाई. उसने कुछ डायग्राम्स दिखाया, ऐसे वो बोल रहे हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ स्काल्प. बचपन के आपके डायग्राम्स के बाद आपको, अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है स्कूल में, तो आपको ये सेकंड चांस दिया जाता है यहाँ पे. नहीं, ज़्यादा हो गया, इतना सीधा नहीं रहते किसी का. अभी मत पूछो मेरे को ये क्या है, मैं इतना नहीं सहन करेगा. स्नेहल काय बोलते तो, ईयर है वो, ईयर, ओके. देयर आर टू आर्टरीज हियर, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर. सुप्राऑर्बिटल, सॉरी सुप्राट्रॉक्लियर पहले, फिर सुप्राऑर्बिटल. ये अंदर से आती है, ये आर्टरीज अंदर से, मतलब कहाँ से, स्कल के अंदर से. So these are branches of ophthalmic artery, which is branches of internal carotid, okay, which is branches of internal carotid. Supraorbital, supratrochlear. Then here there is a branch called as superficial temporal. क्या नाम है? Superficial temporal. वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे. You actually feel the pulse sometimes here. You feel. You are not supposed to test or check. Sometimes what we feel here is superficial temporal. Here is posterior auricular. And lastly, here is occipital artery. External carotid. Ophthalmic branch of internal carotid. नाही, तुझं होऊ दे, तुझं लिहून होऊ दे. दे. पासपोर्ट कैसे तुमको पता नहीं, उसको बताओ. सचिन पासपोर्ट में ग्रुप पे डालता हूँ मैं, फेसबुक पे डाला है मैंने मेरा पासपोर्ट. क्या बोल रही, स्टार्ट. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प. Blood supply of the scalp, head, neck, face. There are two main arteries involved. Common carotid at the upper level of
the thyroid cartilage at C3 C4 disc splits into internal and external. Internal, as name suggests, goes inside the skull. External supplies external structures. Okay, so दो भाई, दीवार मूवी देखा आपने, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। सो दो भाई यहाँ पे बिछड़ जाते हैं। हमारे टाइम ऐसे स्टोरी रहता था कि वो एक इधर गया, अमर अकबर एंथनी, फिर इधर गया, फिर मूवी के एंड में भाई भैया भैया, वो खून ऐसा ये रहता ना दोनों की, फिर दोनों एक दूसरे को पहचानते कि भाई ये कर। तो इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, दे सेपरेट and where they meet on the scalp. So scalp is a site of anastomosis between internal and external, because these three are branches of external. Superficial temporal, जो आपका सर ठनकता है ना, throbbing headache, external carotid. Posterior auricular, occipital. Three are branches of external carotid. The supraorbital, supratrochlear, they come out of the supraorbital, supratrochlear foramen. They are branches of ophthalmic. Ophthalmic is a branch of internal carotid. So दोनों भाई इधर स्काल्प पे मिलते, क्या बोलेंगे एक दूसरे, भैया भैया। आपने वो ऐसा कोई मूवी देखा नहीं कि भाई, एक भी नहीं देखा ऐसा, करण, हाँ करण, हाँ, एंड में ऐसा उनको समझता है कि दोनों भाई है करके। तो कहाँ पे मिलते, कहाँ पे समझता है? वन साइड इज स्काल्प। ओके, so anastomosis is useful if there is a slow occlusion, they can compensate for each other's blood supply. Okay, thank you. Then Sachin sir must have tried to tell you about the nerves shown, but वो इतना बेकार है ना वो टॉपिक। आर्टरी थोड़ा समझ में आ गया? आर्टरीज आपको सिखाने का मेरा हेतु ये था, तो ऐसे क्यों देख रही, समझ रहे हैं ना तेरे को, कुछ स्माइल वगैरह दे ना थोड़ा, समझ रहा है ना? युधिष्ठिर किधर है? हाँ, दिल्ली गर्ल, तुम्हारा नाम क्या है? बट आप कहाँ थे? 2-3 दिन आप दिखाई नहीं दे। आपको दिल्ली का ठंडी मिस कर रहे थे क्या? आप इसके लिए जाके आया? हाँ, बॉम्बे में आके कैसे बीमार नहीं होता यार? विंटर सीजन में बॉम्बे में हमारे डॉक्टर्स ऐसे बेचारे भिखारी की तरह घूमते, कोई बीमारी नहीं गिरता है। या दिस इज मोस्ट हेल्थीएस्ट सीजन। स्लैक सीजन। हाँ, स्लैक सीजन है हमारे डॉक्टर का, बिकॉज इट्स नॉट सीवियर कोल्ड। बाकी गांव में जाओ उनका होता ही नहीं। इधर बॉम्बे में किधर एकदम प्लेजेंट, पूरा बॉम्बे में ऐसा लगता है ना कि एयर कंडीशनर लगा है। यू नो, यू फील सो नाइस इन मुंबई इन दिस मंथ दिसंबर, मतलब मिड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी थोड़ा सा मिड के बाद ये हो जाए। नो, द बेस्ट सीजन्स में है आप लोग। कुछ ठंडी नहीं, कुछ नहीं। बाद में शायद ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। सुप्राऑर्बिटल एंड सुप्राट्रोक्लियर किधर? हाँ, तो युधिष्ठिर किधर गया? हाँ सॉरी, वेयर इज युधिष्ठिर? हाँ, वो बीमार है, एब्सेंट। सुप्राऑर्बिटल एंड सुप्राट्रोक्लियर यूनाइट at the angle of the eye, to form angular vein. कौन सा vein? Angular vein which continues down as facial vein. Supraorbital vein and supratrochlear vein unite at the angle of the eye to form angular vein, which continues down as facial vein. यहाँ पे क्या था? सुपरफिशियल टेम्पोरल। हाँ, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल यूनाइट्स विथ वन वेन कॉल्ड एज मैक्सिलरी वेन, हाँ, टू फॉर्म रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रो मीन्स बिहाइंड, रेट्रो पिक्चर नहीं, पिक्चर क्या पिक्चर, रेट्रो मीन्स बिहाइंड। रेट्रो मूवीज मतलब हम लोग बोलते हैं कि सडनली रेट्रो स्टाइल का मूवी आया, मतलब बिहाइंड, बैक। Okay, retro. To form retromandibular, which is behind the mandible. क्या नाम है वेन का? Retromandibular. Formed by union of superficial temporal and maxillary. Retromandibular vein is a
इज डिफरेंट, डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। हाँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा आपने कभी सुना? तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन एक गाना गाता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों 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 है, बिकॉज वो डिवाइड होता है। वेन नॉर्मली यूनाइट्स, इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर ब्रांच, ब्रांच, अरे बाप रे, वेन में कहाँ से ब्रांच आ गए? डिवाइड्स इनटू एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर। रेयर ऑकेजन्स वेयर वेन्स डिवाइड, आर्टरीज यूनाइट, आर्टरीज यूनाइट आपने सीखा है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी on both side unite to form another anterior spinal artery, ये ऐसा कैसे हो गया? Normally veins unite, arteries divide, यहाँ पे vein is divided. Retromandibular vein divides into anterior, anterior unites with facial vein to form common facial vein, to form common facial vein, common facial vein, okay, common facial vein. समझा? किसी को नहीं समझा हाथ ऊपर करो। ह्यूमेरा, ओके। कौन थे रे उस दिन थर्सडे के दिन मेगा ब्लॉक का बात कर रहे थे मेरे से? कौन सा मेगा ब्लॉक? मैं एम इंडिकेटर पे सब जगह जाके चेक किया, और मैं भी ऐसे घाई में था तो मेरे को भी लगा मेगा ब्लॉक है करके। फिर मुझे समझा रहे आज थर्सडे, मेगा ब्लॉक। तो येड़ा बनाने का भी एक लिमिट है। देन पोस्टीरियर विल यूनाइट, यहाँ पे ये वेन को, ये आर्टरी कौन सा है? पोस्टीरियर यूनाइट विथ पोस्टीरियर ऑरिकुलर टू फॉर्म एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। आपने कुछ लोगों के नेक पे एक ऐसा प्रोमिनेंट वेन दिखता है कभी कभी, यहाँ पे ऐसे साइड पे, दैट इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन। आज आते जाते आप लोगों को खाली इधर सुपरफिशियल टेम्पोरल, कोई टकला दिखा तो यहाँ पे दिखता है सुपरफिशियल टेम्पोरल। देन एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच विल ड्रेन इनटू सबक्लेवियन वेन। ओह, वापस आ गया सबक्लेवियन। सबक्लेवियन आर्टरी याद है क्या आपको? कंटिन्यूज एज एक्सिलरी आर्टरी, सबक्लेवियन वेन। कॉमन फेशियल वेन विल ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन, ये भी आपने सुना है, इंटरनल जुगुलर वेन। हाँ, ऊपर से ट्रांसवर्स साइनस बिकम सिग्मॉइड साइनस, sigmoid sinus continues down as structures passing through jugular foramen। हाँ, जरा क्रिसमस वगैरह एंजॉय किया ना छुट्टी मार के, तो ऐसा होता है। कौन सा वेन है ये? इंटरनल जुगुलर वेन। उसमें क्या ड्रेन करता है? कॉमन फेशियल। There is one connection here which I would like to tell you, that this common facial vein is in connection with the pterygoid plexus. Pterygoid starts with P, P silent. Pterygoid plexus. Pterygoid plexus through deep facial vein. Deep facial vein. ये भी आपने सुना है, आप भूल गए खाली। डीप फेशियल वेन, किसी को याद आ रहा है कुछ भी? हाँ, डीप फेशियल वेन, टेरिगॉइड प्लेक्सिस, ओके। पिछले जन्म को बता रहा हूँ मैं, पिछले जन्म में जब आप मेडिकल स्टूडेंट्स थे तभी आपने ये सीखा था। ये है टेरिगॉइड प्लेक्सिस। इट इज कनेक्टेड विथ by deep facial vein with the common facial vein. This pterygoid plexus through three foramens, foramen lacerum, emissary sphenoidal foramen and foramen ovale, is connected to cavernous sinus. Connected to cavernous sinus. आपको जब साइनस से सीखा है तभी ये सीखा है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस नाम सुना है? स्कल में सेला टर्सिका के दोनों बाजू में होता है।
This cavernous sinus is drained by superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein. So आँख का ड्रेनेज सब उधर जाता है. So this area of the face, which is drained by these veins and these veins, directly or indirectly into cavernous sinus. So infection of the face, सब लोग इधर ध्यान से देखो, अभी कुछ लिखो मत. Infection from this area of the face can go directly to cavernous sinus or through deep facial vein to pterygoid plexus to cavernous sinus and thrombus the cavernous sinus. So therefore this area of the face is called as dangerous area of the face, because veins draining this area communicate inside the venous sinus, inside the skull, that is the cavernous sinus. So infection from here can pass inside and cause thrombosis of cavernous sinus. And then वहाँ से पूरा meningitis हो जाता है. आपको, मुझे तो ये theoretical लगता था, 20 साल में ये सीखा रहा था, cavernous sinus thrombosis, मैं बच्चे लोग को एकदम कॉन्फिडेंट कहीं से कुछ होता नहीं है, बट ऐसा है, मतलब यू हैव टू नो दिस. माय फादर्स फर्स्ट कजिन पूना में थे, तो रात को बहुत ऐसा सर्दी फीवर साइनसाइटिस ऐसा हुआ. सो ही कॉल्ड इन जीपी, फैमिली डॉक्टर. फैमिली डॉक्टर का एटीट्यूड क्या रहता है, रात को 10 बजे कॉल आया तो एक क्रोसिन लो, सो जाओ, कल देखेंगे कल. एंड इन द नाइट द इन्फेक्शन पास्ड फ्रॉम here and thrombosed the cavernous sinus. And next day morning he was with abnormal movement, eyes were bulging out because venous drainage बंद हो गया eye का. Superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic, eyes were bulging out, paralyzed eye, paralyzed everything. For 3 months he was in the hospital. 3 months in Dinanath Mangeshwar hospital. And he could not practice law after that. So, you know, एक एंटीबायोटिक उस दिन वो बोला था, ऑगमेंटिन दे दो रात को. थोड़ा दिन. So of course we should not be too much scared that every infection will go inside. But एक आध होता है तो होता है, ऐसा होता है. Okay, so you got it, venous drainage. Okay, now coming to the last point of the day. कोण मदत करेल मला? तू. हां, असं इतका छान बसलायस ना, ये नाही इकडे. काय नाव तुझं? प्रशांत. क्या बात. तुला आधी एकदा भेटलोय मी कुठेतरी, प्रशांत. हां, तो मैं आदि पण सेवा दिली आम्हाला. मैं ऐसे टर्न्स लेता हूँ, मतलब आपको क्या एक आध बार चौक पाउडर अंदर जाएगा साल में. कृषांक का टर्न बाद में नेक्स्ट टाइम ही आएगा. बट मेरे लिए एवरी टाइम आई इनहेल देन दैट इज नॉट गुड फॉर मी. ओके, so that retromandibular vein passes through parotid gland. Okay, on the face there is parotid gland here on the side, and inside that parotid gland, यहाँ पे कहीं तो parotid gland है, ये ear नहीं है, parotid gland. The facial nerve comes here like this and divides into 5 branches. Temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular and cervical. लिखो, मैं आता हूँ 1 मिनट.